With the discussion of INICET MDS 2024 paper. So first question, identify the given appliance. So when we are talking about this appliance, so this is first option. First option is maxillary implant supported overdenture with bar attachment. Second, mandibular implant supported overdenture with locator attachment. Mandibular implant supported overdenture with bar attachment, and maxillary implant supported overdenture with locator attachment. Okay, so I can see only the mandibular denture mainly. It is not a maxillary denture. The anatomy shows it's a mandibular denture, so the maxillary first and 4 are gone. Okay, then the option here that I can see is mandibular denture with locator or mandibular denture with bar. Okay, so I can only see something like a ball attachment in this. It could have been a better picture. This is how it came in the exam. So the best answer here is it is the mandibular implant supported overdenture with locator attachment. The answer here is B. The locator attachment, they are, write down, they are low profile attachments. Okay, they are low profile attachment. They are better than the stud or the ball attachment. See, the ball attachment is when we are using the ball abutment inside the implant that act as the male portion, and the housing as well as the silicone ring that is picked up in the denture, so that they act like touch buttons. Okay, so male on the implant and female is picked in the denture. Right now, the problem with the ball attachment is that first of all the retention might not be that great. Second, with time the ball also might get attrited, right? So we have to change the ball also. But in case of locator attachment, they are exactly the opposite. And there is also one more problem with ball attachment is that you require more space. Interocclusal space is required in ball attachment is more. So when we talk about the locator attachment, is exactly the reverse. Reverse का मतलब है कि basically एक हम abutment लेते हैं जो हम implant पे डालते हैं, and there is a concavity within the abutment. Okay, so it acts as a female, and the male portion would be would be containing the housing and the attachment that might be made up of peak polyether ether ketone that is having some protuberance that will go inside the concavity of the female that is being togged within the implant. So it is the reverse. The female is in the abutment and the male is picked up in the denture. So ये basically zest anchors types होते थे, ठीक है ना? तो locator attachment के advantage क्या? They are low profile attachments, they require less space, and the retention is also very good, right? So the answer here is mandibular implant supported overdenture with locator attachment. Okay, the bar, if you will see, you will see two bars, you will see two implants, and there is a bar and clip attachment. Okay, you will see that there is a bar and clip attachment, but there is no bar, there is nothing clip, there are only locator attachments. Okay, and also the advantage of locator is that they have dual retention. Write down, they have the advantage of dual retention. Okay, got it? Next question. What are the human natural teeth when the human natural teeth are not in contact? Are they not in contact in rest position? Are they not in contact in deglutition, lateral movements, and mastication? So during swallowing and chewing, they are definitely in contact. During lateral movements, yes, at least the working side may be in contact. But during rest position or the physiological rest position of mandible, when the mandible, the muscles that opens and closes the mandible, they are minimal state of contracture. So where the
there is a freeway space, okay, between the maxillary and the mandibular teeth. So that is the rest position, physiological rest position of mandible. Mind you, for me it might be this, for anybody it might be more, okay. So it depends upon so many things. It depends upon the neuromusculature, it depends upon the TMJs, it depends upon the gravity, it depends upon the emotional variation, depend upon the position of the patient on the chair, whether it is supine, whether the patient is sitting, standing, or there are also diurnal variations. So when the human teeth are not in contact, definitely the answer here is rest position. Clear hai? I hope things are clear. Any doubt? Any doubt? Anything in chat box? Please write down. Next question, implant placed in which region is least successful? देखो इम्प्लांट वैसे तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ ज़्यादा कम सक्सेसफुल है. डेफिनेटली वी से दैट वेयर द बोन इज गुड, वेयर द बोन इज डेंस, द इम्प्लांट फेलियर इज लेसर एज कंपेरेटिवली. बट व्हेन द बोन इज very very weak or it is very soft, so there the chances of failure of the implant are the most. So when we talk about the, let me check the chat box. Any doubts? Any doubts? I'm just writing, just seeing if okay. So the implants placed in which region of the mouth is least successful? So the answer here is posterior maxilla. The best answer is posterior maxilla, because the bone, देखो, we know that there are 4 types of bone categories in quality, that is D1, D2, D3, D4 bone. D1 bone is mainly found in anterior mandible, which is very very dense. Yes, the chances of failure are definitely more, because when you will drill you have to apply a lot of force, speed may be more, the chances of heat generation are there, and over torquing the implant insertion torque may be also more, so chances of compression necrosis are definitely more in anterior mandible. But still D1 bone means a lot of compact bone with very coarse and very compact, even the trabeculae. D2 is found in posterior mandible. So the best bone, if anybody asks कौन सी best bone है, which have both the combination of D1, the combination of compactness and the good blood supply of the trabecular pattern. So they are also compact, the compactness is also okay. So we have the mix of both compactness as well as the trabeculae, that is in D2, that is mainly found in posterior mandible. Then comes D3, where again the compact bone, amount of compact bone is decreasing, and even now the trabecular bone is also getting bad in shape. The trabecular are getting sparser, they are away from each other. So D3 is in anterior maxilla, and the worst bone is mainly found in posterior maxilla, that is D4. D4 may you found a very very thin layer of compact bone. You find that even the trabeculae are also very very less, very very sparse, बहुत दूर होते हैं, so they take more time to heal. So it is a very softest of the bones. So better है कि हम बहुत caution लें, under drill करें, bone को osteodensify करें,
in posterior maxilla we should take care of the bone, right? So in posterior maxilla, yes, definitely the chance of failure of the implants is always and always more. So here the answer is posterior maxilla. Question number 4, ideal finish line for all ceramic crown is, okay, shoulder with bevel. देखो भैया, बेवल कभी भी नहीं दिए जाते ऑल सेरामिक क्राउन में, याद रखो हमेशा। ऑल सेरामिक क्राउन में नॉर्मली यू शुड हैव अ केवो सरफेस एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, रिमेंबर दिस, मोर क्लोजर, वी नीड सर्कमफरेंशियल शोल्डर, okay, circumferential shoulder 90 degrees, that is having a 90 degree with the cavo surface. So that circumferential 90 degree, you know, around the teeth, you know, it supports the ceramic, it works best for ceramic. 90 डिग्री अगर है तो वो हमारा ऑल सेरामिक के लिए है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे शोल्डर होगा। शोल्डर विद बेवल इज बेस्ट फिनिश लाइन फॉर योर PFM, फॉर एंटीरियर, फॉर पोस्टीरियर मैंडिबल। वाई? बिकॉज हम बेवल के ऊपर मेटल मार्जिन रख सकते हैं, अपने मार्जिन को सुप्राजिंजाइबल रख सकते हैं। सो द शोल्डर विद बेवल इज द बेस्ट मार्जिन फॉर पोस्टीरियर PFM, नॉट दैट ग्रेट फॉर एंटीरियर PFM, बट येस posterior PFM, yes. Chamfer is the finish line of choice for, you know, for all metal, okay, not for ceramic. Deep chamfer maybe yes for all ceramic, but not chamfer. Feather edge absolutely not, because there will not be any bulk, it is highly indistinct margin, mainly for all metal, so you will never give feather edge for all ceramic crowns. Okay, got my point or not? तो फेदर एज की इंडिकेशन क्या होती है वैसे बता रहा हूँ। देखो शोल्डर मैंने बता दिया, शोल्डर एक सर्कमफरेंशियल एक लेज देगा 90 डिग्रीज, दैट सपोर्ट्स द सेरामिक वेरी वेल, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक्स। द मेजर प्रॉब्लम विद शोल्डर इज दैट शोल्डर के साथ एक प्रॉब्लम है कि शोल्डर कि शोल्डर क्या करेगा, शोल्डर एक तो ये जो मार्जिन है शोल्डर की, ओके, ठीक है, इफ यू सी दिस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्जिन। तो द प्रॉब्लम विद शोल्डर इज दैट इट इज नॉट अ कंजर्वेटिव मार्जिन, it is not a conservative margin by any means, it is not a conservative margin, right? दूसरी चीज़ क्या है, write down, it has got inferior marginal seal, जो माइक्रो लीकेज हो सकती है, इसकी जो मार्जिनल अडेप्टेशन है वो इन्फीरियर रहती है, it is inferior, it is inferior, it is inferior, right? तो कभी बेवल कभी नहीं देना in case of your all ceramic. Okay, anterior jig is used in which step of denture fabrication? बेटा नॉर्मली देखो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है कि डेंचर, नॉर्मली हम डेंचर फैब्रिकेशन नहीं होगा, इन FPD कर लो इसको। तो एंटीरियर जिग इज यूज इन विच स्टेप ऑफ, या तो मैं इसे फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कर लूँ, या तो मैं फिक्स्ड डेंचर बोल दूँ, या फिक्स्ड पार्शियल डेंचर बोल दूँ, बेटर है वो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। और या मैं यहाँ पे लिख दूँ फुल माउथ फिक्स्ड केसेस, फुल माउथ रिहैबिलिटेशन केसेस, ओके, बेटर है ये। सो सेंट्रिक जॉ रिलेशन, फेसबो, बैलेंस्ड ऑक्लूजन एंड बैक्सअप, तो बेस्ट आंसर इज सेंट्रिक जॉ रिलेशन। वाई? देखो जिग क्या है, एंटीरियर जिग क्या है, देखो आई डू नॉट वांट, आई वांट माय मसल्स, द पोस्टीरियर क्लोजिंग मसल्स, that is your masseter and the temporalis to be relaxed, okay? I do not want them to fire like this, I do not want the red signal from these, I do not want them to be fire. So मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दांतों को, पोस्टीरियर टीथ को आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ले जाऊँ, if they are out of contact, then definitely these muscles, that is your masseter and temporalis, they get relaxed,
and as soon as they get relaxed, okay, the condyle is moving freely and sitting in the middle portion of the disc, okay, and even so we do not have the influence or interference of the teeth, posterior teeth. तो उससे क्या होता है, हमारा जो condyle है it goes freely into the centric relation position. So an anterior jig, an anterior bite plane, leaf gauges, or we have Lucia jig, okay, Lucia jig, anterior bite plane, leaf gauges. These are basically anterior deprogramming devices. These are basically sorry, there is some problem in my writing pen. Okay, you just listen that these devices are used to relax the posterior muscles so that the condyle can go freely and go into the centric relation position. So here the best answer is it is used for centric jaw relation. Okay, good question. A newly fabricated complete denture, okay, the patient reports with a complaint of soreness of the muscles after wearing the denture for some time. Okay, what could be the probable cause? Okay, soreness of the muscles. That means when you find that there is soreness of the muscles in a complete denture patient, muscles, remember this, and even the soreness of the ridges, there might be increased vertical dimension. Okay, तो let us see increase interocclusal space. नहीं, अगर interocclusal space increase होती है, अगर interocclusal space increase होती है, इसका मतलब VD डिक्रीज हो रहा है. तो पहला तो गलत हो गया. डिक्रीज इंटरऑक्लूजल स्पेस का मतलब है इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन. देखो, इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन का मतलब है कि VDO इज इक्वल टू और ग्रेटर देन VDR. मतलब जो फ्रीवे स्पेस है वो है ही नहीं. तो इसका बेस्ट आंसर एक्सेसिव मस्कुलर फोर्स ऑन द डेंचर. देखो वो पढ़ नहीं सकती. रिपीटेड मसल ट्रॉमा देखो हो सकता है, बट इसमें लिखा व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज. द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज डिक्रीज्ड इंटरऑक्लूजल स्पेस. डिक्रीज्ड इंटरऑक्लूजल स्पेस में VDO VDR से ज़्यादा होगा. ओके, और क्या दिक्कत आएगी? व्हेन सी इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ इंक्रीज्ड फ्रीवे स्पेस रादर देन डिक्रीज फ्रीवे स्पेस. VD अगर आपको ऊपर नीचे करना ही है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिड्यूस्ड VD देन टू हैव एन इंक्रीज्ड VD. वाई? बिकॉज the complications or the consequences of increased vertical dimension, it is always more as compared to the decreased vertical dimension. Right? Got it? So what are the other problems? We say there might be some TMJ problems in increased vertical dimension. Difficulty in swallowing, strained facial height, strained facial appearance. Okay, you see long face, incompetent lips, difficulty in swallowing, difficulty in clicking of dentures, TMJ problems, and soft tissue and hard tissue problems on the ridge. Soft tissue problems on the ridge, इसको बोलते हैं मसल सोरनेस, क्रॉनिक मसल सोरनेस. मतलब छाला नहीं होगा पर वो सोर होगी, टच करने पे पेन होगा. सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन. इसको हम फ्लीटिंग अल्सर्स भी बोलते हैं. फ्लीटिंग ulcers, FLEETING. sorry, my pen is not working, I will only speak. Fleeting ulcers, जिसकी वजह से सोरनेस होती है इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन की वजह से. ठीक है, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू स्पीक, दे विल बी क्लिकिंग ऑफ डेंचर्स. ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है इंक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन में. राइट, लेट अस ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद डिक्रीज्ड वर्टिकल डायमेंशन. So when we talking about decreased vertical dimension, we are talking about increased freeway space.
या फिर इंक्रीज इंटरऑक्यूलर स्पेस, तो सिनाइल फेशियल अपीयरेंस होगी, डिक्रीज्ड फेशियल लोअर फेशियल हाइट होगी, मस्कुलर imbalance is the important phenomena that occurs, and also there might be pain in the middle ear cavity because of decreased vertical dimension. Okay, got it? Okay. Now, in removable partial dentures, which of the following functions as minor connector? Now, this is a very confusing question. It says retentive arm. No, retentive arm doesn't act as minor connector. Minor connector वो होता है जो हमारे मेजर कनेक्टर से कोई चीज़ निकली, इट एक्ट एज अ ब्रिजिंग गैप एंड इट कनेक्ट्स एनी थर्ड कॉम्पोनेंट, जैसे रेस्ट हो गई, डेंचर बेस हो गया, ऑक्सिलरी रेस्ट हो गई, इनडायरेक्ट रिटेनर हो गया, डायरेक्ट रिटेनर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो रिटेंटिव नो, ऑक्लूजल रेस्ट नो. नाउ metal framework over the edentulous ridge, yes, it might be a minor connector. And RPI, अब RPI में अब इसमें तो दे रखा है लेट अस, इट इज नॉट अ प्रॉक्सिमल प्लेट. ओके, सो RPI ही क्वेश्चन था. जस्ट अ मिनट. Just a minute. I'm seeing some. Are there any questions on the YouTube chat? Just let me see. ओके, सो तो आरपीआई में तो आपका पूरा आ गया, आपका रेस्ट आ गई, प्रॉक्सिमल प्लेट आ गई और आई बार आ गया. तो बेस्ट आंसर इज मेटल फ्रेमवर्क ओवर द इडेंचुलस रिज. नाउ हाउ दिस इज द बेस्ट आंसर? देखो, अभी नो कि माइनर कनेक्टर जो कि हमारे तीसरे कंपोनेंट से जोड़ते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है, अगेन आई एम सेइंग, जो हमारा मेजर कनेक्टर से कोई भी फ्रेमवर्क जो कि डेंचर बेस को जोड़ दे. तो हेयर द बेस्ट आंसर इज 3. अब वी नो दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज. वन इज योर meshwork type, meshwork construction, loop and ladder design. Then we have a meshwork type. Third is your nail beadwed and the solid design that is we have, right? So when we are talking about the loop and the ladder design, they are mainly indicated in distal extension cases. We have a lot of space in between the struts where the acrylic can come, and it is easier to reline. Remember this. Second is meshwork. Meshwork में छोटी अगर इडेंचुलर स्पेस हो या मॉडिफिकेशन स्पेस हो वहाँ कर सकते हैं, डिस्टल एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं. बट meshwork में से जब हम when we are doing the final packing of the cast partial denture, meshwork से we have to apply a lot of force so that the resin should be pushed through those holes. Third is your solid design with nails, bead weds. That is mainly for the retention of the acrylic, but then it has got the poorest attachment with the acrylic. Okay, the best attachment with the acrylic and the easiest to reline is the loop and the ladder design. Remember this. Okay, so here the answer that we were looking for is the metal framework of the edentulous ridge that connects the major connector to the denture base, right? Next, which of the following is true about reciprocal arm? Okay,
Reciprocal arm is always active? No, it is not active. Reciprocal arm should contact the tooth before the retentive arm flexes over the tooth. Yes, absolutely. That is how it provides the reciprocation. Reciprocal arm provides retention? No, it doesn't provide any retention to the prosthesis. Reciprocal arm is designed to engage the undercuts? No, because it remains at or above the height of contour, so it doesn't come down. तो याद रखो रेसिप्रोकल आर्म क्यों दिया जाता है? इट इज़ फॉर रेसिप्रोकेशन. देखो जब भी फोर्सेस पड़ती हैं, whenever the cast partial denture is inserted, so what will happen is that मान लीजिए ये this is the retentive arm, so जब भी फोर्स, जब भी ये इसके ऊपर जाएगा, हाइट ऑफ कॉन्टूर के ऊपर जाएगा एंड कम्स बिलो द हाइट ऑफ कॉन्टूर, it will push the tooth in the opposite direction orthodontically. So we should have something that should always be first in contact, should brace the tooth by coming first in contact, should always remain in contact when it flexes over the height of contour, the retentive arm, and till it goes, you know, below the height of contour. So यहाँ पे हमारा it provides reciprocation. The reciprocal arm provides reciprocation. This is how it provides reciprocation. Okay, the reciprocal arm. Okay, it is not at all tapered. जो जैसे हमारा retentive arm होता है, the diameter from where it emerges is x, for example. So at the tip it is uniformly tapered, it becomes x by 2, right? The position, and it doesn't, the reciprocal arm doesn't go below the height of contour, so it doesn't engages the undercut. It cannot provide retention. It should never be, yes, मतलब एक्टिव हमेशा नहीं रहता है, बट येस once it flexes, it comes over, it is there, right? So best answer, reciprocal arm should contact the tooth before the retentive arm flexes over the tooth. Absolutely, this is the right answer. Okay, what should be the recommended amount of occlusal reduction for posterior teeth when used for cast gold metal prosthesis? Okay, अब देखो भाई, इसमें कास्ट गोल्ड दे रखा है. अब कास्ट गोल्ड या जो भी हमारा मेटल है अराउंड 1 to 1.5 mm रिडक्शन करते हैं. 1 mm ऑन नॉन फंक्शनल कस्प एंड 1.5 ऑन दी फंक्शनल कस्प. तो उसके हिसाब से द बेस्ट आंसर इज 1.5 mm. 2 mm हम नॉर्मली 0.75 mm करते नहीं है किसी के लिए. 2.5 mm बहुत ज़्यादा हो जाती है. 2 mm अराउंड हम करते हैं PFM या ऑल सेरामिक के लिए. तो हेयर द बेस्ट आंसर इज योर 1.5 mm रिडक्शन. Okay, so this is how we can talk about this. Okay, always when you are doing reduction 0.5 mm हमेशा जब भी हम डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रूव्स देते हैं to have a uniform reduction with the straight fissure burr. Okay, तो हमेशा 0.5 mm. अगर हमें 1.5 mm रिडक्शन करनी है तो हम डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रुप 0.5 mm कम करते हैं ताकि वो हमारा फिनिशिंग में आ जाए. ओके, तो हियर द बेस्ट आंसर इज 1.5 mm. ओके, बोथ upper and the lower RPDs were individually tested for high points, okay, and occlusion with the opposing natural teeth. Okay, the occlusion was found to be normal. However, when both RPDs were tried together, hypoocclusion occurred. What could be the cause? Now, अभी question क्या कह रहा है? Question ये कह रहा है, मान लीजिए मैंने maxilla and mandible, I got the RPDs fabricated. Okay, so once you are, so the clinician here in the question is asking, for example, if I have inserted the maxilla and I have not inserted the mandible and I am closing perfect, I remove the upper arch RPD. Okay, now I put the lower RPD and then close, occlusion is fine. Now when both the RPDs are inserted, the teeth are in hypoocclusion, means अब हमारे जो नेचुरल टीथ हैं वो हमारे उसमें आ जाते हैं. hypoocclusion का मतलब है वो occlude ही नहीं कर रहे. What can be the cause? Okay, अब पहले दो क्वेश्चन जो हैं, द फर्स्ट चॉइस इज दैट मैक्सिलरी डेंचर बेस प्रीमैच्योरली कॉन्टैक्ट द मैंडिबुलर टीथ. भैया वो हो नहीं सकता क्योंकि वो बता रहा है कि या तो मैक्सिला अगर इंडिविजुअल डाला है या मैंडिबल इंडिविजुअल डाला है तो
कोई भी हाई पॉइंट नहीं था, तो ए और बी तो बिल्कुल गए. ओके. सी एंड डी मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डेंचर बेस प्री मैच्योर कॉन्टैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं. देखो आपने कभी गौर किया होगा, जब भी आप डेंचर माउंट करते हो, डेंचर पहनते हैं, कई बार पोस्टीरियर हील एरिया कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं और फिर आगे दांत कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, राइट. तो इट कैन बी दी कॉज. ओके. सेकेंड कॉज, ऑक्लूजन ऑफ द आर्टिफिशियल टीथ आर इन प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट. यस, हो सकता है कि डेंचर जब आपस में वो हाई हो, तो जब हाई होंगे तो नेचुरल टीथ तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे. जब तक आप ऑक्लूजन रिडक्शन नहीं करेंगे, नेचुरल टीथ अपने आप कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे. तो आंसर मे बी सी एंड डी. ओह, वी हैव गॉट टू चॉइसेस. तो द आंसर हेयर इज डेफिनेटली सी एंड डी. कि मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डेंचर बेस कैन प्रीमेच्योरली कॉन्टैक्ट, जो कि हमारे फिर जब जब वो कॉन्टैक्ट कर जाएंगे तो दांत कॉन्टैक्ट में आएंगे ही. देन आर्टिफिशियल टीथ कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट में है, डेफिनेटली इट माइट बी अ प्रॉब्लम. यस, गॉट इट. Any doubts? Okay, any doubts? Okay. Next question. Okay, so what does the image represent? Okay, let me see. I can see a central bearing point in the maxilla and central bearing plate in the mandible. Okay, that means is it a T-scan? No. Intraoral Gothic arch? Yes. Extraoral? No. Occlusal force distribution mapping? No. So the best answer is intraoral Gothic arch tracing. Now it is, write down the Gothic arch tracing. When we do, it is the most accurate visual means of recording as well as verifying the tentative centric. Then we have two types of Gothic arch tracing, intraoral and extraoral. If you have the styli and the central bearing plate inside the mouth, and the patient is doing all the movements and you get a arrow point tracing, the tracing becomes very smaller and the dentist cannot guide the patient while he is doing the movements. तो ये problem है intraoral tracing की, but the image represents yes intraoral tracing because everything is intraorally. But if we talk about extraoral tracers, you must have seen, I have always shown you in my classes, they will have something that is coming out and they will have a styli and a recording plate that is attached outside the mouth. So that are better, anytime, any day better. लेकिन यहाँ पे you see the central bearing point and the styli and the plate inside the mouth, nothing is coming out outside the mouth, so it is intraoral tracer. These are not extraoral tracers, these are intraoral tracer for recording and verifying the tentative centric. Okay, got it. Remember this, that you do Gothic arch tracing only in class 1 cases. Class 1 you have good interface space, moderately resorbed ridges, बहुत ज़्यादा severely resorbed नहीं होने चाहिए. Good patient should have good neuromuscular control. Patient should not have TMJ problems. बहुत ज़्यादा class 2 class 3 नहीं होना चाहिए. It should always be class 1 because it is based upon the concept of force centralization. Class 1 में maxilla is sitting on the top of the mandible. Okay, और हमेशा contact में रहेगा central bearing point and central bearing plate. Got it? तो यहाँ पे the best, तो the problem with intraoral Gothic arch tracing are two. The tracing is smaller, and okay, so द इंट्राओरल Gothic arch ट्रेसिंग क्या साइज स्मॉल होता है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम होती है कि you, because it is happening inside the mouth, dentist cannot guide. Okay,
जो एडवांटेज आ जाती है वो एक्स्ट्रा ओरल गॉथिका ट्रेसिंग में आ जाती है कि एक्स्ट्रा ओरल गॉथिका ट्रेसिंग में इट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द माउथ एंड द ट्रेसिंग साइज इज लार्जर, द पेशेंट इवन द डेंटिस्ट कैन गाइड द मैंडिबल इन सेंट्रिक। तो पेशेंट को हम एजुकेट और ट्रेन अच्छा कर सकते हैं उससे। तो द बेस्ट आंसर हियर इज योर एक्स्ट्रा ओरल गॉथिका ट्रेसिंग। इट इज द मोस्ट accurate visual means of doing the recording the centric jaw relation. Okay, which of the following conditions bone tapping is performed before implant placement? Okay, let us see the choices: demineralized bone, osteoporotic bone, dense bone and resorbed bone. Okay, remember this, that bone taps are used so that before the last, after the last drill, I want a tap that should make some purchase inside the osteotomy site, so that when my implant go into it, it should go fully without any lot of insertion talk. देखो, जब भी हम हार्ड बोन में इम्प्लांट डालते हैं, स्पेशली D1 D2 बोन, तो ज़्यादा टॉर्क आ सकता है बिकॉज द बोन इज़ वेरी हार्ड, राइट? वी डू नॉट वांट ओवर टॉर्क in mandible, especially in D1 D2 bone, because compression necrosis होने के चांस होते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, there are lot of problems. Okay, so in such cases what we do is before after the final drilling and before the implant placement, हम bone taps आते हैं, उनको लगाते हैं और स्मॉल स्पीड में 30 से 40 RPM की स्पीड में हम चलाते हैं ऑस्टियोटमी के अंदर, तो वो अंदर टैपिंग कर देता है. ओके, तो उससे फिर इम्प्लांट जब हम डालते हैं तो इट गोज ईजीली विदाउट शोइंग अ लॉट ऑफ टॉर्क. ठीक है, तो सॉफ्ट बोन, ऑस्टियोपोरोटिक बोन, रिजॉर्व बोन में नहीं यूज़ होता, हम डेंस D1 D2 बोन में यूज़ करते हैं. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार, राइट? द प्रोसीजर शोन इन द इमेज ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ कास्ट पार्शियल डेंचर, इज इट अ सिलिकॉन यूज फॉर डुप्लीकेटिंग द कास्ट? वैक्स ब्लॉकआउट प्रोसीजर, application of refractory material and agar use for duplicate is a definitely it is an agar. देखो कुछ green सा blue सा यहाँ से, it is a agar duplicating flask that is there, and you can see here the machine, the liquefaction chamber of the agar. So हम इसे 70 to 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखते हैं, एंड इसके अगार डुप्लीकेटिंग फ्लास्क के अंदर कास्ट रखी होती है. ओके, और हम फिर इसके अंदर अगार डालते हैं, राइट? बिल्कुल मेल्टेड या बिल्कुल सॉल्व फॉर्म में अगार डालते हैं ताकि इट डुप्लीकेट्स द कास्ट इनसाइड द फ्लास्क दैट यू सी. ठीक है, तो ये सिलिकॉन होते हैं डुप्लीकेट, बट दिस इज नॉट अ डुप्लीकेटिंग सिलिकॉन, दिस इज बेसिकली अगार फॉर डुप्लीकेटिंग द कास्ट. ओके, got it? तो answer here is 4. Then comes the last question. A patient presents with a single edentulous area involving one missing molar and one missing premolar with a healthy abutments. Okay भाई, एक premolar missing है, एक molar missing है with healthy abutments. Okay, the patient does not require pre-prosthetic treatment. Okay, कोई प्री प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट, कोई प्री प्रोस्थेटिक नहीं चाहिए, और क्लास 1 मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप है विद ऑप्टिमल ऑक्लूजन. सब कुछ ठीक है, बस एक प्रीमोलर और एक मोलर मिसिंग है. मस्कुलेचर ठीक है, क्लास 1 ठीक है, कोई प्री प्रोस्थेटिक नहीं चाहिए. तो भैया ये कौन से कंडीशन में क्लासीफाई होगा? ओके, इज इट द एप्पलगेट्स टाइप 1? नो. कैनेडीज एप्पलगेट टाइप 2? नो. अरमानी क्लास 1? नो. अरमानी इज वो तो हेमीवैक्सिलेक्टमी केसेस में काम आती है. तो दिस इज प्रोस्थोडोंटिक डायग्नोस्टिक इंडेक्स PDI क्लास 1. नाउ व्हाट इज दिस PDI? ओके, लेट अस सी. इन क्लास 1 द PDI, द प्रोस्थोडोंटिक डायग्नोस्टिक इंडेक्स, इट बेसिकली वी हैव 4 क्लासेस. वन इज योर आइडियली और मिनिमली कॉम्प्रोमाइज्ड. अब डेफिनेटली आइडियली या मिनिमली कॉम्प्रोमाइज में आपकी रिच फॉर्म ठीक होगी, एक्सीलेंट क्रेटिनाइज टिश्यू होगा, नॉर्मल अटैचमेंट होंगी, फेवरेबल इंटरनल रिलेशनशिप है, एडिक्वेट सलाइवरी फ्लो है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल अच्छा है. तो आंसर हो जाएगा PDI क्लास 1.
उसके बाद थोड़ी रिजॉर्प्शन हो गई, थोड़ा सा जो याद रखो रिजॉर्प्शन के बाद जो मसल अटैचमेंट होती है इट इज़ मोर क्लोजर टू द रिज। माइनर सिस्टमिक के लोकल फैक्टर हो सकते हैं, स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज इंटरस्ट स्पेस हो सकती है, ये है मॉडरेटली कॉम्प्रोमाइज क्लास 2। ठीक है, उसके बाद क्लास 3 में सब्सटेंशियली कॉम्प्रोमाइज। सो व्हाट द सब्सटेंशियली कॉम्प्रोमाइज शो? सब्सटेंशियली कॉम्प्रोमाइज शो मार्क रिज रिजॉर्प्शन, अटैच म्यूकोसा कम हो गया, लिमिटेड हो गया, हमारी मसल और क्लोज हो गई, क्लास 2 क्लास 3 इंटर रिलेशनशिप हो गई, द सलाइवरी फ्लो इज लेसर एंड द इवन द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इज नॉट दैट ग्रेट। ओके, तो क्लास 1 से क्लास 4 तक जब मैं आऊँगा तो कंडीशन और वर्सन हो रही है। तो पहले था मिनिमली कॉम्प्रोमाइज्ड और आइडियल, दूसरा मॉडरेटली कॉम्प्रोमाइज, फिर सब्सटेंशियली कॉम्प्रोमाइज, और लास्ट होगा हमारा डेंटल क्रिपल जो होते हैं या सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। इसमें हमारी बिल्कुल नाइफ एज या फ्लैट रिज होंगी, म्यूकोजा अटैच म्यूकोजा होगा ही नहीं, अनफेवरेबल इंटरआर स्पेस है, पुअर मस्कुलेचर है, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड डेंचर फेलियर है। इसको बोलते हैं क्लास 4 या सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। तो पीडीआई क्लासिफिकेशन ये नंबर 1 में आता है आपका केस कि भैया सबको ठीक है। ठीक है, इसमें हम दिस इज़ रॉन्ग सिंगल इडेंचुलस एरिया नहीं बोलेंगे, इसमें हम लिखते हैं कंप्लीटली इडेंचुलस। ओके, पेशेंट विद और अ कंप्लीटली इडेंचुलस पेशेंट ये बोल सकते हैं। Completely edentulous patient who does not require pre-processed treatment and has class 1 with optimal occlusion, even the muscle attachment are okay. Yes, so this will come under your prosthetic diagnostic index class 1. Okay, clear है? Last question, when fabricating the restoration the mandible was inadvertently forced backwards during recording of the centric relation. Okay, what would be the resulting implications of the restoration? Okay, first there will be discrepancy in the anterior posterior direction but no discrepancy in superior inferior direction. Second, the resulting restoration would be in supraocclusion because the condyles were not seated superiorly and moved backward and downward. Okay, see, third, the resulting restoration will lead to infraocclusion because the condyles were not seated superiorly and move backward and downward. Okay, the resulting restoration will provide optimal intercuspation despite the condyles not being seated superiorly and move backward and downward. Okay, now the problem here is क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई जब तुम सेंट्रिक रिकॉर्ड ले रहे थे तो तुमने मैंडिबल को सेंट्रिक से भी पीछे ले गए, रिट्रूसिव ले गए और उससे भी। तो याद रखो जब हम मैंडिबल को और रिट्रूड करते हैं, पीछे ले गए, तो मैंडिबल जब पीछे जाता है इट गोज डाउन एंड बैकवर्ड्स ऑल्सो। अब हमारा ये तो गया नहीं ऊपर, कॉन्डाइल इज नॉट सीटिंग इन सेंट्रिक बट बेसिकली मैंडिबल शिफ्ट हो गया हमारा पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, हमने वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हमारी प्रोसेसेस तो डेफिनेटली जब पीछे नीचे चला गया तो स्पेस ज़्यादा हो गई, जब हमने रिकॉर्ड किया वही कास्ट माउंट होगी पेशेंट के पास, उसके पास चलेगी टेक्नीशियन के पास। अब टेक्नीशियन को लग रहा है कि हाँ भाई स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मटेरियल ऐड करेगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा होगी। नाउ व्हेन द सेम prosthesis is being tried in the patient and now the patient actually bites in the real centric, तो डेफिनेटली वहाँ स्पेस कम होगी, हमारी प्रोसेसेस में ज़्यादा मटेरियल है तो वो सुपर ऑक्लूजन में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्डाइल पहले सीट नहीं हुए थे एंड बेसिकली अर्लियर दे मूव्ड बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, सो द बेस्ट आंसर हियर इज दैट द रिजल्टिंग रेस्टोरेशन विल लीड टू सुपरा ऑक्लूजन बिफोर द कॉन्डाइल्स because the condyles are not seated superiorly and move backward and downward. Answer is B. Clear है? Any doubts? Any doubts?
Any doubts? I'm waiting. I'm waiting. Any doubts if you have, kindly write in the chat box. So I'm not getting any questions. So I hope you have understood and understood the concept that AIIMS dental faculties are providing you, and I hope you do lot wonders in the upcoming INICET exam and the further NEET exam for the next year. Okay, I hope you do well. You work hard. So the more you work hard, the luckier you get. Remember this. Don't leave any stone unturned. We all are there with you. We'll be providing you with the fantastic concepts of dental, all the subjects in DAMS. Happy Deepavali to all of you. Stay safe. Okay, and enjoy Deepavali. Thank you so much.